हेलो गाइस, वेलकम टू द डेटा सफिशिएंसी ओरिएंटेशन लेक्चर। तो आज हम डेटा सफिशिएंसी का ओरिएंटेशन लेक्चर करेंगे, हाउ टू टैकल डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस। नाउ द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन इज, like let's take an example. A general data sufficiency question looks like this. There's a question followed by two hints or two choices, we can say A or B. What we need to figure out in data sufficiency is, one, whether the hint A alone is good enough to solve question for me or not, or hint B alone is good enough to solve question for me or not. Now my answers will vary upon these things. So let's look at this thing, the answer choices. The answer choices, I would mark A as my answer if hint A or hint 1 alone was sufficient, but hint 2 alone was not sufficient enough to answer the question. Okay, so these questions are generally half completed, so they require some help to complete them and then find the answers to the questions also. So I will mark A as my answer if hint 1 is good enough and hint 2 is not. I will mark B as my answer as per these directions. So obviously these directions can vary upon set to set. So according to these directions that I would be marking something like this. So hint 2 alone is sufficient and hint 1 is not, then I will mark B as the answer. Now, if supposedly hint 1 is also sufficient and hint B is also sufficient individually to answer the question, then I would mark D as the answer, which says that each statement alone is sufficient to answer the question. So my answer would be in the domain of A, B and D. Now, the next possibility is that hint 1 and hint 2 both are not good enough to solve the question for me. Then I would take the help of both the hints together and would try to solve the question. If I am able to do so, then I will mark C as the answer, which says that both statement 1 and 2 together are sufficient to answer the question, but neither statement alone is sufficient. So A, B, D is one zone and C and E are another zone. And I will mark E as the answer if both statement 1 and 2 together are also unable to solve the question for me. So I will take the help of both the hints together only if one statement alone is not good enough. Else I will never move into the next zone of C and E, where I hope it's okay, where I require the help of both of them together at the same point of time. Now there are certain tips and strategies for data sufficiency. We'll talk about it. These rules can change, the order of these marking options can change from question to question. Right. Now what type of question that would be asked? That can vary from algebra questions to blood relations to coding, decoding to what else. So there can be a quant question or a reasoning question. Right. So that can vary like anything. Okay. So we'll talk about data sufficiency tips and strategies over here. Now the following 11 strategies that you should help to become a master of data sufficiency section is study the questions carefully. So the data sufficiency is one area which is asked in IBPS also, SSC also, CAT also, companies like INFOSYS also ask, ACCENTURE also ask them, Capgemini also asks data sufficiency. Data sufficiency is present in almost every paper now, and these are the questions that the students would most probably appear into it also. So these are the questions which are very luring in nature. Hence the students would definitely do these questions and they would feel that these questions are easy also. But these questions are very deceptive also. You would think that I have marked the right answer for the question, but the answers would change like anything because of many factors. That's why we are looking at these strategies so that you don't do wrong. One can be reading in between the lines. So if you're not reading in between the lines, then there can be an issue. So what is the value of X? Suppose that's a question. They have asked you the value of X. They have not asked you the multiple values of X. I'm just giving you the hint.
So let's talk about the first strategy. Study the question carefully. So as I was saying, so it can ask you for a specific value of x. Just say what is the value of x. That means you require a specific value. All the values can range. It can be a range of products, a range of the prices of the products from 100 to 500. Or it can be a true false value question. We'll talk about each one of them. So you need to study the question carefully, that whether it has asked for a specific value or a range of values, or is it a true false value. Okay. So let's talk about the specific value example. So we'll take a couple of examples in between also so that you can understand and relate to it. A specific value, what is the value of x, y and z? That's the question. So don't look at the answer please. So a, x, y and z are either 1, 0 or minus 1. So what does that mean? So value of x can vary like anything. 1, 1, 1. It can have the value 2 also. It can have the value 0 also. It can have the value minus 3 also. It can have the value plus 3 also. So the value of x would be very difficult to find from the hint 1. Hint A. Hint B. X square plus y square plus z square is equal to 2. Correct. So over here obviously the answers are the directions of the questions would be different. So x square plus y square plus z square is equal to 2. So even if I take the question as x plus y plus z ka whole square is equal to x plus y plus z is equal to x square plus y square plus z square plus twice of xy plus yz plus zx, even then I won't be able to take the values. So what I have done is that I have taken the help of second along with the first, though I should not have done this. I should have tried for first and then second individually. So if I try second individually, I am nowhere close to the question. Hence with second I would not be able to come and close the question. And with both the together also I am unable to find the answer. So hence in this case, even with the help of both the statement, don't look at this. This will be different for the other thing. In spite of using the information for both these statements, I would not be able to find the answer. Now let's come to the next example. The gray that I have marked you is for this a true false value that I was referring to. This true false value. So is x greater than y? Now whenever this question where the is comes in, so is x greater than y? What do I need to answer? Whether I need to prove it that x is greater than y, or whether I need to disprove it. What I need to do is that I need to say true or false. So if it is true, then it needs to be 100% times true. And if I say the answer to the question is false, then it should be 100% times false. I hope you understood. So same will happen in question number 1 and same will happen in question number 7 and same will happen in wherever is the question starts with is. So that's what the meaning of a true false value type of questions. So is x greater than y? Let's try to solve these two questions also. X plus y is equal to 6. Correct. So is x greater than y? I won't be able to answer it. X plus 2k is equal to 15. Y plus k is equal to 10. So by using both these two, I can eliminate k, but I won't be able to answer of x and y. But I would be able to answer it with the help of both of them because I will get two variables and two equations. And also one thing, आप लोग देखोगे कि कुछ क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन के बहुत करीब जाके सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चन में बहुत दूर से कर लूंगा. ये इंडिविजुअलिस्टिक कॉल होती है. आपको क्वेश्चन के कितने करीब जाना है, क्या क्वेश्चन कितने दूर से सॉल्व करना है. डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऑल्सो, तो कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Is the product of x and y greater than 60? Again, I need not prove that it is greater than 60. I just need to say whether it is 100% time true or whether it's 100% time false. So I can answer anything out of these two and that would be good enough. So hint 1 says the sum of x and y is greater than 60. Sum of x and y is greater than 60. So 60 into plus 1, 61 is greater than 61. So if I multiply both of them, the product will be not greater than 60. Correct? And I will have examples on both sides. Less than 60 is also possible and more than 60 is also possible. Correct? And 60 is also possible.
ग्रेटर देन y बोला है, उसने x प्रोडक्ट ऑफ x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू y नहीं बोला है। सो 58 इंटू 2 और 57 इंटू 3 ग्रेटर देन y होगा, ये बात सही है बिल्कुल, बट 60 इंटू 1 विल गिव यू 60, दैट मीन्स द प्रोडक्ट विल बी 60, हेंस दिस इज वन केस। तो जैसे मैं कह रहा था, हिंट 1 में सिर्फ एक केस है जहां की मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अगर x और y में से एक 60 हुआ और x 1 हुआ तो 60 इंटू 1 विल द प्रोडक्ट विल बी 60, और क्वेश्चन में पूछा गया इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y ग्रेटर देन 60, करेक्ट। तो वो तब हो पाएगा जब ये पक्का हो जाए। तो हिंट 2 ने मुझे वही मदद कर दी। ईच ऑफ द वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन 2, तो दोनों वेरिएबल 2 से बड़े हैं। तो जो एक केस मेरा खराब हो रहा था जिसके कारण मैं आंसर ट्रू नहीं बोल पा रहा था, वो केस इसने सॉल्व कर दिया। उसने कह दिया x एंड y बोथ ग्रेटर देन 2, तो 58 इंटू 2 हो या 57 इंटू 3 हो, तो प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 60, करेक्ट। द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को। सो क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन। आप कहोगे कि आपको क्या चाहिए है, x और y का वैल्यू चाहिए है। यहीं पर आप गलती कर गए। लग रहा है x और y का वैल्यू से आंसर, बिल्कुल सही बात है। x और y का वैल्यू आपको पता होता देन यू वुड बी एबल टू रीच टू द आंसर, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस। तो आपको बेसिक वैल्यू चाहिए क्या है, आपको बेसिक वैल्यू चाहिए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी गलत फहमी है कि मुझे एक्स और वाई चाहिए है। एक्स और वाई मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। हिंट ए सेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज गुड इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने एक्स और वाई की वैल्यू बिना जाने भी मेरा आंसर आ गया। ऐसी ही गलतियां डेटा सफिशिएंसी में बहुत ज्यादा होती हैं, करेक्ट। x is equal to 3, hint B alone would not be good enough, hence hint 1 alone is answer. So whichever is the correct option according to the directions given for the question, I will mark the answer. Next, a small storage tank is spherical in shape. Okay. What is the storage volume of the tank? ठीक, spherical in shape पता लग चुका है। The thickness of the tank is 1 centimeter. इससे डायरेक्टली तो मुझे कोई फायदा दिख नहीं रहा है। Hint B, when the empty spherical tank is immersed in the large tank filled with water, 20 liters of water overflow from the tank. When the empty spherical tank is immersed in the large tank filled with water, 20 liters of water overflow from the tank. तो इससे क्या होगा, तो यहां पर आंसर आएगा कैसे। तो स्टेटमेंट ए हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बी सेज 20 liters of water displaced when the tank is immersed. This should be the outer volume of the spherical tank. तो इसने मुझे क्या बताया, आउटर वॉल्यूम। अब इनर वॉल्यूम पे पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, थिकनेस ऑफ द टैंक। Hence, with both the options together, I would be able to reach to the question. आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन के बहुत करीब जाके सॉल्व करूंगा, कुछ को बाहर से ही हाँ या ना कह दूंगा, बिकॉज बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। डेटा सफिशिएंसी में कोई ये नहीं कहता कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताना है, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा विद द गिवन कंडीशंस, करेक्ट। स्ट्रैटेजी 3, लुक एट ईच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये गलती सबसे ज्यादा होती है, हम सेकंड वाले में सबसे ज्यादा गलती होती है कि हम सेकंड वाला पढ़ते वक्त कहते तो हैं कि आई एम रीडिंग द सेकंड हिंट अलोन, बट उसमें कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट वाले का इंफॉर्मेशन भी साथ में ले आता हूं। स्ट्रैटेजी 4, स्टेप 3, डिड नॉट प्रोड्यूस एन आंसर देन कंबाइन द टू स्टेटमेंट्स। जैसा मैंने आपसे कहा था, ACE उन डायरेक्शंस के हिसाब से और ACD जो भी, सॉरी, ABD और C और E दो अलग अलग ग्रुप हैं। जब तक किसी भी अकेले से सॉल्व हो सकता है तब तक हिंट 1 अलोन, हिंट 2 अलोन और आइदर के बीच में ही हम खेलते रहेंगे। जब दोनों अकेले फेल हो चुके होंगे तभी हम दोनों के साथ आएगा या दोनों के साथ नहीं आएगा उस पर आएंगे, ठीक है। मैं अगर मदद जबरदस्ती नहीं लूंगा कि अकेले से आंसर आ रहा है तभी मैं कहूंगा दोनों से मिलकर आंसर आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। फिफ्थ, यूज ओनली द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस।
बिल्कुल सही बात है. You should use the information given only in the question set. Correct. Next one is do not get bogged down with complicated or lengthy calculations. So the seventh strategy is use process of elimination. तो यहां पर आप एलिमिनेट करिए, और यहां पर ऐसा भी कुछ लिखा नहीं हुआ कि स्टेटमेंट ए नीड्स टू बी रेड फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 कैन नॉट बी रेड फर्स्ट. अगर आपको स्टेटमेंट 2 लेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप स्टेटमेंट 2 को पहले पढ़ लीजिए, जज इट वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 2 अलोन और नॉट, एंड देन गो फॉर स्टेटमेंट 1. So whichever is easy, eliminate first and then move on to the second one. 8th strategy would be on the lookout of the statement that tell the same thing. ये सबसे ज्यादा होता है, स्पेशली जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो हम हिंट 1 देखते हैं, हम कहते हैं कि एक इक्वेशन है एक्स और वाई का. हिंट 2 देखते हैं, हम कहते हैं एक और इक्वेशन एक्स और वाई का. सो हेंस 2 इक्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई आर देयर, हेंस आई वुड बी एबल टू रीच टू द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. Correct, but that can be very challenging. Let's look at this example given in the hint 1. So statement 2 simply state backward. So hint A over here is x is 50% of y. So I'll get one equation of x and y. Hint B alone says the ratio of y and x is 2:1. Again another equation of x and y, but I will not be able to reach to the values of x and y because both these statements are saying the same thing. Hence, instead of 2 equations, I have got only 1 equation. 9th strategy, make real world assumptions. तो जो सबको पता है वो दिक्कत नहीं. दी वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब दी वैल्यू ऑफ एक्स होता है. व्हाट इज दी वैल्यू ऑब्लिक वैल्यूज ऑफ एक्स? ऑब्वियसली यू कैन रीड इट, राइट. एंड नेक्स्ट इज डू नॉट अज्यूम फिगर्स ड्रॉन टू द स्केल. तो जैसा हम डीआई में बोलते हैं कि भाई आप स्केल से नाप के नहीं बोल सकते हो कि यहां पर ये डॉट लाइन ग्राफ में 8 पे है कि 9 पे है, 17 पर कि 18 पे है. तो ऑब्वियसली आप स्केल, अगर डीआई और डीएस का मिक्स भी आ सकता है. सो अ डीआई चार्ट कैन बी प्रेजेंट इन द डेटा सफिशिएंसी चार्ट आल्सो. इन दैट केस आप फिगर्स को स्केल से नाप नहीं सकते हैं. द लास्ट ऑफ द एंटायर लॉट इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. Solve at least 300 to 400 questions of data sufficiency before you will get the accuracy of 100%. And my suggestion is कि आप सेट 1 10 क्वेश्चंस करिए, कहीं से भी उठा लीजिए, एंड राइट योर परफॉर्मेंस दैट आई गॉट 5 out of 10 करेक्ट. Because data sufficiency is one area where nobody would leave questions in the paper. All of you would attempt all the questions and assuming that you have done all correct. But only in the results that would come out that whether you have got it right or not. So practice as many questions and keep solving them and make sets and try to analyze your performance also over the period of time. Okay guys, thank you.